Morning to all, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic measures to remove the situation of excess demand and deficient demand. In the previous class we learned about the monetary measures to remove the situation of excess demand and deficient demand, and these are the quantitative measurement. Today we are going to discuss about the topic monetary measures but the qualitative instrument. It means qualitative instrument. To remove the situation of excess demand and deficient demand. The first is marginal requirement. Second is credit rationing. Yeah, it is also called the fixation of quota for loan. And last is moral social. First is marginal requirement. First of all, what do you mean by the marginal requirement and how we can remove the situation of excess demand या inflationary gap या deficient demand या deflationary gap with the help of the marginal requirement. These are the monetary measures या qualitative measures which are applied by the RBI. The marginal requirement, it is the difference between the value of loan and value of कोलैटरल. इट मीन्स सपोज अगर आप 20 लाख का लोन लेते हो और सपोज आपको 35 लाख की सिक्योरिटी यानी कोलैटरल के रूप में रखना पड़ता है, देन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आर 15 लाख. सो दीज आर द मार्जिनल रिक्वायरमेंट. It means by increasing or decreasing the marginal requirement, the RBI can control the situation of excess demand or deficient demand. So, in the first situation, excess demand, yani to control the situation of excess demand, the RBI also increase the marginal requirement. It means then if the marginal requirement are increased by the RBI, then the loan will be expensive, right? Loan expensive हो जाएगा and the demand for the loan would be decreased and the money supply also decreased, and when money supply decreases then aggregate demand also decreases and the RBI can control the situation of excess demand या हम कह सकते हैं inflationary gap. And during the situation of deficient demand, the marginal requirement also decreased by the RBI. It means when marginal requirement decreased, then these also, it means loan will be cheaper. Loan सस्ता हो जाएगा. Then demand for loan would be increased. It means then these also increase the money supply in our economy, and when money supply increases, then aggregate demand also increases. So the RBI can control the situation of deficient demand या deflationary gap. So by the marginal requirement, by this process, the RBI can control the situation of excess demand or deficient demand. The second concept is credit rationing या fixation of quota. Then these instruments are applied by the RBI to control the situation of excess demand या inflationary gap. यानी in this concept, the RBI also fix the quota for the loan. It means RBI सभी commercial बैंकों को ये instruction देता है कि for the business activity, the quota for loan are decided by the RBI and the above limit of the quota, these are not provided by the commercial bank. It means अगर commercial मान लो RBI के द्वारा 10 करोड़ का quota decide कर दिया गया कि 10 करोड़ से ज़्यादा कोई भी commercial बैंक बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, देन
कोई भी कॉमर्शियल बैंक 10 करोड़ से ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो लोन क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा. सो दिस प्रोसेस ऑल्सो डिक्रीज द मनी सप्लाई इन अवर इकोनॉमी एंड आरबीआई कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड. And to control the situation of deficit demand, the fixation of quota for the loan, these can be removed by the RBI. इसको रिमूव कर दिया जाता है, क्रेडिट राशनिंग को हटा दिया जाता है. फिर कॉमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से कितना भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड आरबीआई कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप. द नेक्स्ट इज मोरल सोशल, नैतिक प्रभाव डालकर. इट मीन्स the all banking system are controlled by the RBI. So all the rule and regulation which are made by the RBI, these can be followed by all commercial bank. If any commercial bank does not follow the rule and regulation which are made by the RBI, then RBI can take strict action against those banks. अगर कोई भी बैंक उनके रूल को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है. इट मीन्स या तो उनकी ब्रांच को खत्म कर सकता है या द ब्रांच कैन बी मर्ज इन अनदर ब्रांच, यानी या उस ब्रांच को मर्ज कर सकता है, दूसरी ब्रांच में उसको विलय किया जा सकता है. सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द आरबीआई कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. सो दीज आर द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. And these are the qualitative instruments which are applied by the RBI to control the money supply in our economy. And the next policy is fiscal policy. ये थी हमारी monetary policy. प्रीवियस क्लास में हमने एज ए मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे. रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एज ए SLR, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन. Or in this class we learn about the qualitative instrument, marginal requirement, moral, social, credit rationing. Then the second policy which are applied by the government to control the excess demand or deficit demand. These are the fiscal policy. Then first of all, what do you mean by the fiscal policy? It is also called the budgetary policy. Budgetary policy, it means it is the estimation of the government revenue and expenditure during in an accounting year. यानी एक accounting year में government की revenue और expenditure का जो measurement है, these are called the fiscal policy या government policy. And the instrument which are applied by the government to control the situation of excess demand and deficit demand, these are the first is government expenditure. Government expenditure. Second is public debt. Third is taxes. Fourth is borrowing from RBI. So these are the four instruments which are applied by the government to control the situation of excess demand and deficit demand. The first is government expenditure. यानी by increasing or decreasing the government expenditure, the money supply should be increased or decreased by the government. For example, the government expands on the infrastructures, developed or non-developed program. यानी the government can also expand on the construction of road, dam, bridge, electricity, power generation, housing as a यानी totally economic and social infrastructures. So by increasing the government expenditure, if the government expenditure increased, then these also increase the money supply in our economy. It means income level बढ़ेगा तो money supply बढ़ेगी. Then these process also increase the aggregate demand and the government can control the situation of deficit demand या deflationary gap. And by decreasing the government expenditure, the government can control the situation of deficit excess demand. इट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो इनकम लेवल कम होगा, इनकम लेवल कम होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, देन इट ऑल्सो डिक्रीज द एग्रीगेट डिमांड. देन सेकंड इज पब्लिक डेप्ट या पब्लिक बोरोइंग. यानी द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बोरोस फ्रॉम द पब्लिक. इट मीन्स जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटीज होती है उनसे लोन लेती है. सो बाय इंक्रीजिंग टू
control the excess demand, the government can also increase the public borrowing in the economy. If the public borrowing increase, then these process also decrease the money supply in our economy, and the government can control the situation of excess demand या inflationary gap. And during the situation of deficient demand, the public borrowing also या public debt also decreases by the government, and when public debt decreases, then these also increase the money supply in our economy. एंड मनी सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज टैक्स। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज द टू टाइप्स ऑफ टैक्स, द डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। यानी दो प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स विच आर लीगली इम्पोज्ड ऑन पर्सन्स विच आर लीगली पेड, एंड indirect tax which are legally imposed on one person but paid by the another person। यानी डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। सो बाय इम्पोजिंग द टैक्स बर्डन, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। यानी ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, द टैक्स बर्डन ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट, सो दिस प्रोसेस ऑल्सो डिक्रीज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, राइट, और गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। एंड टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, द टैक्स बर्डन ऑल्सो डिक्रीज बाय द गवर्नमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। एंड टैक्स बर्डन बढ़ेगा तो इनकम लेवल बढ़ेगा, इट मीन्स मनी सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एंड वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। देन लास्ट इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। यानी टू कंप्लीट देयर फिस्कल डेफिसिट, द गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम द आरबीआई, एंड आरबीआई गिव्स दिस करेंसी बाय इशूइंग मोर नोट्स। यानी ज्यादा से ज्यादा करेंसी इशू करके आरबीआई ये लोन गवर्नमेंट को पे करती है। इट मीन्स अगर वो आरबीआई ज्यादा से ज्यादा करेंसी इशू करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, और कम करेंसी इशू करेगी तो मनी सप्लाई कम होगी। सो ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, the government also decrease the borrowing from RBI. So the RBI issues less currency, and when less currencies are issued, then these also decrease the money supply. Money supply कम होगी, aggregate demand कम होगी, और government can control the situation of excess. So the situation of deficient demand, the government also decreases the borrowing from increases the borrowing from RBI. Then RBI issues more currency, and when more currencies are issued, then these also increase the money supply, and aggregate demand also increase, and the government can control the situation of deficient demand. So this concept also called borrowing from RBI, it is also called the deficit financing. Deficit financing भी कहा जाता है इसको। So by this all process, the government can control the situation of excess demand and deficient demand by applying the four instruments. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.